Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. So we'll try to complete today that remaining part from your thyroid gland and thyroid hormones, and tomorrow we'll see that parathyroid hormones. So we have seen this about the thyroid gland. So we have seen the thyroid gland is laid in the your neck, right? It is present on both side of your trachea, just behind the larynx. Larynx means sound box. Trachea means windpipe. Right? We also covered the regulation of thyroid hormones. We'll again cover. So about the thyroid hormones, they are nothing but the thyroxine and triiodothyronine. दो हार्मोन्स होते हैं. थायरोक्सिन मतलब T4 and triiodothyronine मतलब T3. There are two hormones of thyroid gland, T4 and T3. They are called as a T3 and T4 on the basis of number of iodines present. कितने iodine molecule है उसमें? Based on that, they are called as a T3 and T4. So if there are three iodines, so it is known as triiodothyronine, and if there are four iodine, known as a tetraiodothyronine. So thyroxine is known as a tetraiodothyronine. Right? So thyroid glands, they are situated in the root of neck on either side of your trachea, just behind the larynx. The two lobes of this thyroid gland, they are separated by a structure known as isthmus. Now gland is having numerous kind of follicular cells. जो thyroid gland होता है उसमें बहुत सारे क्या होता है follicular cells होते हैं. There are numerous follicles or follicular cells which are lined by a cuboidal cell, cuboidal epithelial cells. Thyroid gland में क्या होता है कि numerous follicular cells are present which are lined by cuboidal cells. Follicular cells, this is one follicular cell, you can see, follicular cell. Dot present in this dot is known as a follicular cell, and it is surrounded by a cuboidal epithelial cell. Now this is known as a follicular cell, and follicular cell in the thyroid gland में जो follicular cell होता है, that will secrete a one colloid like substance, colloidal substance known as a thyroglobin. तो एक colloid substance secrete करता है, उसको बोलते हैं अपन thyroglobin. And also that follicular cell secrete two hormones known as a T3 and T4. So T3, T4, thyroxine and triiodothyronine. Now between the follicular cells there are some parafollicular cells. ये जो जैसे there are two follicular cells, there are two follicular cells. Between these follicular cells there are parafollicular cells, and parafollicular cells also secrete one hormone known as a calcitonin. तो follicular cells क्या secrete करते हैं आपके? Follicular cells will secrete a thyroglobin, then thyroxine and T3, but parafollicular cell will secrete a calcitonin. इसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है कि calcitonin is secreted by
फॉलोइंग सेल्स प्रेजेंट इन द थायराइड. तो थायराइड में फॉलिकुलर सेल्स जो होते दे secretes or they releases the thyroglobin and T3 T4, but calcitonin is released by parafollicular cells. You have to remember this. Now if you compare the total secretion of this thyroid gland, right, so out of that 100% secretion, so 90% secretion is nothing but thyroxine. Okay, that is a tetraiodothyronine, and 9% is a T3 triiodothyronine, and only 1% is a calcitonin. Okay, now if you compare the half life of these two hormones, जो थायरोक्सिन है ट्राइआयोडोथायरोनिन है उसके हाफ लाइफ कंपेयर करेंगे तो क्या है, तो T3 हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 10 to 24 hours and T3 is a 4 times potent than T4. मतलब the quantity of T3 required to produce the same effect is 4 times less than T4. So T3 is more active, T3 is a more potent, T3 is a triiodothyronine is a 4 times more potent than thyroxine, but thyroxine is a longer acting. Thyroxine is a longer acting, it will act around for 7 days. Half life uska 7 days hota hai, and as it binds strongly with the plasma protein. So after the release, these hormones they are released by thyroid gland in the blood, and after release these thyroid hormones they will bind to the plasma proteins like thyroid binding globulin TBG and then albumin, right? So there are proteins in the plasma which are the carrier for these hormones. So albumin, globulins, so these are the protein, right? Now T4 or thyroxine that binds strongly with the plasma protein, that's why the half life of T4 is longer, okay, as compared to T3. Now they are secreted at the rate of, let's say for example कैसे secret होते हैं, so T4 is secreted at the rate of 80 to 90 microgram per day, and thyroxine is secreted at the rate of 80 to 90 microgram per day. T3 is secreted at the rate of 4 to 5 microgram per day. All these hormones they are metabolized in the liver and kidney. All these hormones are metabolized in the livers and kidney. Now these hormones they are nothing but the derivative of they are the derivative of tyrosine and iodine. The hormone जो है, these are the hormones of derivatives of iodine and tyrosine. Tyrosine होता है और iodine होता है. So these hormones are the derivative of tyrosine and iodine. Ty for tyrosine, iodine A2. So they are the derivative of tyrosine and iodine. Most of the hormone जो है they are the protein in nature, but this one is a derivative of amino acid, right? Now if you check the previous year's question papers उसमें एक क्वेश्चन एक दो बार पूछा है कि स्टेप्स इन द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स, जो थायराइड हार्मोन के स्टेप्स होते हैं सिंथेसिस के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा है. नाउ व्हाट वाज दैट क्वेश्चन, आई विल डिस्कस इन द अपकमिंग स्लाइड. ठीक है, देखो सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, सिंथेसिस ऑफ T3 T4, different steps and what happens in the every step. So I have summarized in a short but sweet manner. I have summarized that in a short but sweet manner. Okay, so if you go and read the reference books, so it will take around 2 hours to read you, because उसमें बहुत सारे steps है और उसमें का क्या important है क्या नहीं है वो आपको मालूम नहीं रहता है, वो मुझे मालूम है क्योंकि बहुत बार एग्जाम दिया है बहुत बार. That's why I have summarized over here. So it is a precise notes. Yeah. Now for the synthesis of thyroxine and or T3, for the synthesis of thyroid hormones, you need a iodine, you need a tyrosine, you need a iodine and tyrosine. So iodine and tyrosine they are the precursor. Iodide and tyrosine they are the prerequisite for the synthesis of your thyroid hormones. But thyroid hormone synthesis takes place in the thyroglobin. जो parafollicular cells होते हैं, they releases the one colloidal substance known as thyroglobin,
and the synthesis of thyroid hormone takes place in the thyroglobulin. Now iodine, whatever iodine you are taking from diet, जो आप रोजमर्रा के खाना खाते हो उसमें जो आयोडीन आता है आपको सॉल्ट में से, तो दैट आयोडीन इज कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड. आयोडीन होता है वो आयोडाइड में कन्वर्ट होता है कहाँ पे, जीआईटी में. दैट इज कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड इन द जीआईटी. नाउ नॉर्मली 1 mg of iodine per week is required ना. 1 mg 7 दिन में लगता है आयोडीन, is required for the synthesis. Now what are the stages of synthesis of these hormones? These hormones, they are synthesized in the different steps. पहला स्टेप क्या है, thyroglobulin synthesis. Second step is the iodine trapping. Third step is the oxidation of iodine. Fourth step is the transport of iodide to the follicular cavity. Fifth step is the iodination of tyrosine. And sixth step is the coupling reaction. Now यहाँ पे देखो ये जो स्टेप्स है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आई थिंक एक बार आ चुका है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर. कैसा क्वेश्चन पूछेंगे, अरेंज दिस स्टेप्स इन द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स इन अ करेक्ट ऑर्डर. पहला क्या है, फर्स्ट स्टेप इज अ थायरोग्लोबिन सिंथेसिस. थायरोग्लोबिन is a protein, colloidal substance produced by follicular cells. It is a large glycoprotein having 140 amino acid. क्या है थायरोग्लोबिन, क्या, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन. Glycoprotein with a 140 amino acids. It is synthesized, secreted and stored in the follicular cells of your thyroid gland by the endoplasmic reticulum and Golgi apparatus of the follicular cells. तो फॉलिकुलर सेल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एंड गोल्गी apparatus होता है, दे विल सिंथेसाइज, secrete and store this thyroglobin, which is a glycoprotein having 140 amino acids. So that is stored. Now second step is iodine trapping. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका. व्हाट इज आयोडीन ट्रैपिंग? नाउ वट एवर आयोडीन यू टेक्स फ्रॉम द डाइट, आपके खाना में खाते हो आप, उसमें सॉल्ट यूज करते हो, सॉल्ट आयोडाइज्ड होता है टू प्रिवेंट द गोइटर एंड दिस थिंग्स. नाउ दे हैव इंक्लूडेड 1 part of sodium iodide with the 1 lakh part of your sodium chloride. तो याद रखना है 1 to 1 lakh उसका प्रोपोर्शन होता है. 1 part of sodium iodide that is mixed with the 1 lakh part of your sodium chloride, that is known as iodized salt. आजकल जो iodized salt होता है वो ऐसे प्रोपोर्शन में होता है. That will fulfill your iodine demand your body. Now iodine trapping means what? So iodine trapping means there is a movement of iodine from blood to the thyroglobin. Movement of iodine from blood to the thyroid gland. Movement of iodine from blood to the thyroid gland known as a thyroid trapping. क्यों? Because it is a kind of uphill transport. It is a kind of uphill transport. That means transport of iodine against the electrochemical gradient. Transport of iodine against the electrochemical gradient from the blood to the thyroid gland. Because thyroid gland में क्या है, आयोडीन बहुत ज़्यादा स्टोर होता है, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आयोडीन का ज़्यादा होता है. Still iodine is transported into the thyroid gland and that need energy. So uphill transport of iodine against the electrochemical gradient from the blood to the thyroid gland. The process is known as iodine trapping. Process क्या है ये? It is known as iodine trapping. Now movement of iodine from blood to the thyroid against the electrochemical gradient known as iodine trapping. Now for that iodine pumps are there. Iodine pump जो होते हैं, they transport iodine into follicular cell normally. So iodide is more concentrated in the thyroid gland than blood. Blood में concentration कम रहता है थायराइड का, आयोडीन का, और थायराइड ग्लैंड में ज़्यादा रहता है. So iodine is more concentrated in a thyroid gland. थायराइड ग्लैंड में आयोडीन ज़्यादा होता है, ब्लड में कम होता है. और वही that is nothing but the gradient है ना, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, एक में कम है. तो मूवमेंट ऑफ आयोडीन फ्रॉम ब्लड टू द थायराइड
against the electrochemical gradient known as the iodine trapping. Now, once iodine is iodide is available in the thyroid gland, so that iodide pumps are there in the thyroid, which transport the iodide into the follicles. Now, they say if there is a overactive thyroid or hyperactive thyroid gland is there, so 200 times more iodine is there in a thyroid gland as compared to blood. ब्लड से 200 टाइम्स ज़्यादा आयोडीन कहाँ पे रहता है? थायराइड में रहता है. इन केस ऑफ ओवरएक्टिव थायराइड, so 200 times more iodine is there on a thyroid as compared to blood. Okay, देखो पहला स्टेप क्या था? थायरोग्लोबिन सिंथेसिस. सेकंड स्टेप इज आयोडीन ट्रैपिंग. थर्ड स्टेप इज ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड. अभी जैसे मैंने बोला था, वट एवर आयोडीन यू आर टेकिंग फ्रॉम ट्राइड, दैट इज कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड इन द GID, and iodide is transported. Right? Iodide is transported. Now, for the synthesis of thyroxine and T3, you need a iodine in a reduced form. So, so oxidation of iodide. So iodide is oxidized. So iodide is oxidized to iodine. Iodide is oxidized to iodine by the thyroid peroxidase. Thyroid gland में एक एंजाइम होता है thyroid peroxidase, which will oxidize the iodide into iodine in the follicular cells. As iodine only can combine with the tyrosine, but iodine cannot be transported in the body in the iodine as it is. Iodine for transportation converted into iodide, and again it is a reduced. Now deficiency of this enzyme, कौन सा enzyme? Deficiency of this thyroid peroxidase also leads to deficiency of thyroid hormones. This is the oxidation of iodide. Now fourth step क्या है? Transport of iodine to the follicular cavity. है ना? There is a pump over there. Transport of iodine to the follicular cavity by iodide chloride pump, and that is known as a पेंड्रिन. पंप होता है वहाँ पे, उसको पेंड्रिन बोलते हैं. ओके, नाउ फिफ्थ स्टेप क्या है? आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन. तो टायरोसिन कहाँ से आ गया? फ्रॉम द, है ना, इट मे कम फ्रॉम योर अमीनो एसिड पूल. जो भी डेली आप प्रोटीन वगैरह खाते हो उसके अमीनो एसिड आता है टायरोसिन. तो iodination of tyrosine is the fifth step that takes place in the follicular cell into the follicular cavity. तो क्या होता है? Iodine will bind with the thyroglobin. The process is known as organification. Of thyroglobin. जो process है binding of iodine to the thyroglobin, that is known as organification of thyroglobin. Now this process is accelerated by enzyme known as iodinase. Now सबसे पहले क्या बनता है? फर्स्ट मोनोआयोडोटायरोसिन. पहले बनता है मोनोआयोडोटायरोसिन. फर्स्ट मोनोआयोडोटायरोसिन इज मेड. And then diiodotyrosine is made. Right? So all these monoiodotyrosine, MIT or DIT, diiodotyrosine, both are known as iodotyrosine residues. ये जो MIT है, MIT मतलब क्या? मोनो आयोडोटायरोसिन. एंड DIT मतलब डाइआयोडोटायरोसिन. ये बनते हैं पहले. राइट नाउ यहाँ से कपलिंग रिएक्शन चालू होता है. दैट इज स्टेप 6, कपलिंग रिएक्शन. कपलिंग रिएक्शन मतलब क्या? जैसे दो मोनो आयोडोटायरोसिन कंबाइन होकर डाइआयोडोटायरोसिन बनेगा, या फिर डाइआयोडोटायरोसिन का एक मॉलिक्यूल प्लस मोनो आयोडोटायरोसिन का एक मॉलिक्यूल, वो ट्राइआयोडोटायरोसिन बनेगा. Like that. So coupling reaction. So one diiodotyrosine plus one monoiodotyrosine will form a triiodothyronine T3. And when two molecules of this diiodotyrosine will combine to form a tetraiodothyronine. There are two molecules. When two molecules of diiodotyrosine residue will combine to form a tetraiodothyronine, that is T4. And one MIT, one DIT will form a triiodotyrosine. Right now, so this is in a combination of thyroglobin. Here T3, T4A, they always are in a combination of thyroglobin.
थायरोग्लोबिन के साथ में अटैच होते हैं एंड दे आर स्टोर्ड इन थायरॉयड ग्लैंड फॉर सेवरल मंथ, अराउंड 4 मंथ, है ना. वंस थायरॉयड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड, they are stored in the thyroid gland for longer period. They say it is the only gland which can store a hormone for longer period, है ना. जो थायरोक्सिन है वो 4 महीने तक आपके थायरॉयड ग्लैंड में स्टोर होकर रहता है, राइट. थायरोक्सिन कैन बी स्टोर्ड इन द थायरॉयड ग्लैंड फॉर 4 months. Only gland having long period storage capacity. Now 5 to 6 थायरोक्सिन मॉलिक्यूल, कितने, 5 या 6 थायरोक्सिन मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल ऑफ थायरोग्लोबिन. स्टोर कितने होते हैं, 5-6 मॉलिक्यूल ऑफ थायरोक्सिन विल बी स्टोर्ड इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ थायरोग्लोबिन. के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, डीप में, बहुत डीप में है. तो यहाँ पे क्या समझ में आया, डिफरेंट स्टेप्स इन द सिंथेसिस ऑफ योर थायरॉयड हार्मोन, है ना. बाकी हार्मोन के इतने स्टेप्स नहीं लिए मैंने, क्यों, ये नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन देखा था मैं. तो थायरोग्लोबिन सिंथेसिस फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप आयोडीन ट्रैपिंग, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है. थर्ड स्टेप इज आयोडीन ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड. फोर्थ स्टेप इज ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडाइड टू द फॉलिकुलर कैविटी. फिफ्थ स्टेप इज आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन. सिक्स्थ स्टेप इज कपलिंग रिएक्शन, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. लास्ट लाइन जो है, इट इज स्टोर्ड फॉर 4 months and 5 to 6 thyroxine molecule will combine with the 1 molecule of thyroglobin. Okay, so important, right? Now next is nothing but the release and regulation of thyroid hormones, right? So as I told you, पिछले steps में क्या देखा है आपने कि thyroid hormone they are stored in the thyroid gland in combination with the thyroglobin. So obviously if you need thyroxine hormone, what will be the step? So obviously that complex of thyroglobin and thyroid we should be broken down. So cleavage of release में क्या होगा, cleavage of thyroxine from thyroglobin, and then it is released in the blood. Now release takes place from the pseudotrope cells mediated by one hormone known as a megalin, which is a proteolytic hormone. Lysozyme dissociate the complex, it releases the hormone. Now regulated by anterior pituitary and hypothalamus. जो anterior pituitary का जो हार्मोन होता है थायरोट्रोपिन TSH, है ना, एंड उसके ऊपर भी हाइपोथैलेमस का होता है, एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. तो रेगुलेशन कैसे होता है, देखो यहाँ पे, when there is a, है ना, who will stimulate the release of thyroid hormones known as the stimulatory factors, and those factor which will decrease the thyroid hormone release known as the inhibitory factor. तो stimulatory factors कौन है for the release of thyroxine? So stimulatory factor to release the thyroxine nothing but the low BMR, आपका basal metabolic rate कम हो गया, then if there is release of this leptin is a hormone produced by adipose tissue, then alpha melanocyte stimulating hormone, that is a hormone produced by pituitary gland. They stimulate the hypothalamus to produce a thyrotropin releasing hormone, which will act on a pituitary gland to produce a thyroid stimulating hormone, and thyroid stimulating hormone will act on a thyroid gland to produce a T3 T4. जैसे T3 T4 ब्लड में आता है, ये क्या करेंगे, BMR इंक्रीज कर देंगे, बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर देंगे, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देंगे, है ना, सब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देंगे, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन रेगुलेशन, राइट. जैसे ये BMR कम हो जाएगा, है ना, जैसे BMR बढ़ जाएगा, दैट सिग्नल इज सेंड टू योर gland to stop the production of this thyroid stimulating hormone. Also signal is sent to the hypothalamus to stop the production of thyrotropin releasing hormone. That is a negative feedback mechanism. Okay. Now what are the factors which stimulate the release of this which are the factors which inhibit the release of this thyroid hormone? जैसे excess iodine intake, आयोडीन अगर ज़्यादा खा लिया आपने तो वो इनिबिट करेगा प्रोडक्शन. सोमेटोस्टैटिन, स्ट्रेस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड डोपामाइन.
dopamine will also decrease the release of these hormones. Okay, so this is the regulation and release, right? Now what are the functions of these thyroid hormones? Important है because thyroid का issue आजकल बहुत चल रहा है, that's why इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं. So what are the functions of thyroid hormones? So first function, they increases the basal metabolic rate. BMR इंक्रीज करते हैं, आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज करते हैं. मोस्टली कैटाबोलिज्म, मोस्टली कौन सा? कैटाबोलिज्म, बिकॉज मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म. एनाबॉलिज्म मीन्स synthesis, catabolism means breakdown. Okay, so they increases the breakdown and mostly they are the calorigenic action, they are calorigenic in nature, matlab they will produce calories, and by increasing the oxygen consumption of your body, increases the metabolism of most of the tissue. Thyroid hormones will increase the metabolism in the most of the tissue, but except कौन है? Except brain, retina, spleen, testes and lungs. They increases the metabolism in the all tissue except brain, retina, spleen, testes and lungs. And that's why जब hyperthyroidism होता है, when you will have hyperthyroidism, so when there is thyroid hormone excess, so there is a increased BMR up to 60%. तो आपका BMR 60% से तक गया है. नॉर्मली कितना होता है? 30 to 50% होता है ना, 30 to 50% BMR. बट अगर आपका 60% तक इंक्रीज हो गया, मतलब आप यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायरॉयडिज्म. एंड इन हाइपोथायरॉयडिज्म BMR is decreased up to 20%. Now second function, increases the synthesis of proteins. जो प्रोटीन्स है आपके, yes, from iodine trapping, which question come? Tell me once more. तो जो आयोडीन ट्रैपिंग है उसी के ऊपर क्वेश्चन आया है, मतलब the step in which there is a transport of iodine from blood to the thyroid gland against the concentration gradient is called as, ऐसा ही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, that is known as iodine trapping. Movement of iodine from blood to the thyroid gland against the concentration gradient, क्योंकि आयोडीन ज़्यादा स्टोर होता है कहाँ पे? थायराइड ग्लैंड में. तो ऑब्वियसली थायराइड ग्लैंड में क्या होगा? उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, है ना. तो जब मूवमेंट कब होता है? डिफ्यूजन में है ना, पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है? व्हेन देयर इज अ concentration of drug at one side, more is there, and at another side is there less, so there is a movement. but यहाँ पे क्या है? ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है थायराइड में आयोडीन का, still iodine is moved to the thyroid against the concentration gradient, against the electrochemical gradient known as upfield process. Now that is known as iodine trapping. That process is known as iodine trapping. वो सही के ऊपर क्वेश्चन आया था ये राहुल. Now thyroid hormones increases the synthesis of proteins. How they will increase the synthesis of protein? Obviously they will increase the translation, transcription, they increases the mitochondrial activity of cell, and they increases the different cellular enzyme activity. They increases the protein synthesis by increasing translation. Translation means protein synthesis, transcription, then mitochondrial activity of cell, and increases the enzyme activity. Third function क्या है? In short, increases the absorption, utilization, transport of glucose. मतलब थायराइड हार्मोन क्या करते हैं कि ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन, उसका यूटिलाइजेशन, ट्रांसपोर्ट बढ़ा देते हैं, है ना. ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना. देन दे आल्सो मोबिलाइजेस द फैट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू. तो एडिपोज टिश्यू में आपके लिपिड्स है उसको मोबिलाइज करेंगे एंड ब्रेक डाउन करेंगे, एंड दैट्स व्हाई देयर इज ए इंक्रीज इन द फ्री फैटी एसिड इन द ब्लड. बेसिकली थायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं? दे विल ब्रेक डाउन द लिपिड्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, दैट्स व्हाई देयर इज ए इंक्रीज इन द फ्री फैटी एसिड इन द प्लाज्मा. They decreases the cholesterol and phospholipid and triglyceride in the plasma. That's why hypothyroidism leads to atherosclerosis. अगर थायराइड हार्मोन्स नहीं है तो उसके कारण क्या होता है? हार्डनिंग ऑफ योर ब्लड वेसल, atherosclerosis. Now thyroid hormone can cause vitamin deficiency. Okay, hypersecretion of thyroxine can lead to vitamin deficiency.
थायराइड इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस, थायराइड क्या करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, थायराइड हार्मोन इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर. नाउ अगेन थायरोक्सिन इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ deficiency, है ना, thyroid hormone is important for growth. That's why deficiency of thyroid hormone may leads to mental retardation in the fetus, है ना. fetus में देखो यहाँ पे कंसेप्ट बोलता हूँ मैं आपको, है ना, कि जैसे थायराइड जब बच्चा माँ के पेट में होता है, when fetus is in a womb of mother, so here the child is getting the thyroxine from mother's blood, right? So there might be thyroid hormone in the blood of fetus also. After the delivery, suppose if there is a genetic condition or if there is a absence of thyroid gland in the fetus, बच्चे में थायराइड ग्लैंड ही नहीं है तो थायरोक्सिन तो बनेगा नहीं. बट जैसे ही डिलीवरी होता है, जैसे बच्चा आता है इस वर्ल्ड में, इमीडिएटली उसको थायराइड का डेफिशिएंसी डिटेक्ट नहीं होता है. यू कैन नॉट डिटेक्ट द थायराइड डेफिशिएंसी ऑफ fetus immediately after birth. Why? Because you know that this thyroxine is having, you know, thyroxine is stored in the, you know, blood, you know, stored in the gland, you know, thyroid gland में बहुत टाइम तक स्टोर होता है. Also it is longer acting, so you cannot detect thyroid deficiency in the fetus soon after the birth. It will take few weeks to develop a symptoms of thyroid deficiency, है ना. And if thyroid deficiency is not treated, so that will leads to mental retardation of that fetus. Thyroid hormones are very very important. Thyroid secretion, है ना, तो hyper secretion of thyroid decreases the weight, है ना. अगर थायरोक्सिन ज़्यादा हो गया, hyper secretion of thyroid is there, so that decreases the weight. And hyposecretion increases the weight. That's why यहाँ written है vice versa. Vice versa का मतलब उसके opposite. Hypersecretion of thyroid will decrease the weight, and hyposecretion of thyroid will increase the weight. So hypothyroidism leads to polycythemia also, abnormal increase in the RBC, increase in the different activities of cardiovascular system. So these are the different functions of thyroid gland which I have summarized in a short. Now next part we'll see the factors affecting the release of thyroid hormones. Thyroid hormones को कौन से factor affect करते हैं? So we have already seen this. So some factors which increases the thyroid hormone release, they are nothing but the basal metabolic rate, then leptin hormone released from adipose tissue, alpha melanocyte stimulating hormone from pituitary gland. These things increases the secretion of thyroid. Also thyroid stimulating hormone increases the release of thyroxine in the infants. Now excessive iodine intake, stress, somatostatin, glucocorticoids, dopamine, they will decrease the release of thyroxine hormone, thyroid hormone. Now यहाँ पे देखो diseases of the thyroid hormone, disease of thyroid gland. तो hyperthyroidism कौन सा है पहला? hyperthyroidism, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं कि which one is a which one disease caused by hyperthyroidism, which one is caused by hypothyroidism. तो hyperthyroidism के कारण कौन से डिसीज होते हैं? Disease produced by hyperthyroidism. Hyperthyroidism मतलब क्या? Increased T4 in the body. Increased level of thyroxine in the body known as a hyperthyroidism, or increased T4 level in the body, hyperthyroidism. Now hyperthyroidism is caused by, क्यों, क्या कारण है इसका भाई? Is caused by two reason. पहला कौन सा रीजन है? ग्रेव्स डिसीज. कौन सा डिसीज? ग्रेव्स डिसीज. ग्रेव मतलब क्या है? ग्रेव यार्ड मतलब क्या है? शमशान. ग्रेव डिसीज मतलब क्या है? ये डिसीज होगा तो शमशान में जाएंगे आप, है ना. दैट्स वाई ग्रेव्स डिसीज मतलब ग्रेव्स डिसीज ना. इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म. देखो
ग्रेव्स डिसीज के कारण हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। थायराइड एडिनोमा मतलब कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड के कारण हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह ये नहीं होता, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाओ आप, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। ग्रेव्स डिसीज एंड थायराइड एडिनोमा, इनके कारण हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। Hyperthyroidism is because of the Graves' disease and thyroid adenoma. Now, what do you mean by Graves' disease? Hyperthyroidism is caused by Graves' disease and thyroid adenoma. What is mean by Graves' disease? It is the most common cause of hyperthyroidism. Most common cause is इसका hyperthyroidism. क्वेश्चन आपको आ सकता है important. Now, Graves' disease is a kind of autoimmune disease. कौन सा है? Autoimmune disease. Autoimmune disease. क्या होता है? नॉर्मली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बाइंड्स टू द रिसेप्टर ऑफ थायराइड सेल एंड स्टिमुलेट द थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। नॉर्मली क्या होता है कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन आता है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट बाइंड्स टू द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूसेस द थायराइड हार्मोन इन द थायराइड ग्लैंड। बट इन ग्रेव्स डिसीज में क्या होता है? तो एंटीबॉडीज दे आर सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH के अगेंस्ट में, मतलब TSH को एंटीजन एज अ ट्रीट की करती है बॉडी, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है, उसको बोलते हैं अपन एंटीबॉडीज नोन एज अ थायराइड स्टिमुलेटिंग ऑटो एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज इज नोन एज अ TSAPS, थायराइड स्टिमुलेटिंग ऑटो एंटीबॉडीज. Now these antibodies are produced and which continuously stimulate your thyroid gland to produce a thyroxine hormone, and that's why there is a hypothyroidism. So these antibodies, thyroid stimulating auto antibodies, they have a longer half life. इसका half life ज़्यादा है, जैसे 12 hours. एंड नॉर्मली आपका थायरोक्सिन का हाफ लाइफ होता है 60 मिनट. तो मान लीजिए ये एंटीबॉडी है आपकी बॉडी में, तो ये 12 आवर्स तक आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज द थायरोक्सिन. दैट्स व्हाई कंटिन्यूअस थायरोक्सिन विल बी रिलीज्ड एंड इट विल कॉज हाइपरथायरॉयडिज्म. Graves' disease is one of the reason for hyperthyroidism. Hyperthyroidism is not reason for Graves' disease. Graves' disease is the reason for hyperthyroidism. What is that? It is an autoimmune disease. The most common cause of hyperthyroidism is a Graves' disease. Second क्या होता है? थायराइड एडिनोमा. ये थायराइड ग्लैंड का कैंसर. तो लोकलाइज्ड ट्यूमर ऑफ थायराइड विच सिक्रेट्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन्स एंड इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द ऑटोइम्यूनिटी. ये कैंसर के है, थायराइड ग्लैंड का कैंसर होगा, मतलब थायराइड के सेल्स अनकंट्रोल ग्रो होंगे तो वो हार्मोन भी अनकंट्रोल रिलीज करेंगे. नाउ हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण क्या होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म वन डिसीज देयर, एक्सोथैमोस. इट इज एक्सोथैमोस मतलब क्या? एक्सोथैमोस मतलब जो पेशेंट है ना, जो आईज है, एक्सोथैमस मतलब जो आदमी है उसकी जो आईज है ना, ये जो आईज है तो प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, ये जो आईबॉल्स है वो बड़े बड़े हो जाएंगे, उसके आईबॉल्स बड़े बड़े हो जाएंगे एंड इट विल कम आउटसाइड एंड देयर इज एडिमा स्वेलिंग, इडेमेटस स्वेलिंग ऑफ रेट्रोऑर्बिटल टिश्यू. जो आइज की टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू, उसके स्वेलिंग आ जाएंगी एंड देयर इज अ डीजनरेटिव चेंजेस इन द एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल. ओक्यूलर मसल है उसमें भी डीजनरेशन होता है एंड ड्यू टू दिस इट कैन डैमेज योर ऑप्टिक नर्व एंड इट कैन लीड टू ऑप्टिक नर्व डैमेज एंड ब्लाइंडनेस. एक्सपो है ना, एक्सोथैमोस इज अ कंडीशन है. ये मैं कोई है ना पेंटर नहीं हूँ, बट जस्ट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू. ठीक है. सो ग्रेव्स डिसीज एंड थायराइड एडेनोमा, दीज आर द मोस्ट कॉमन. ग्रेव्स डिसीज एंड थायराइड एडेनोमा, दे आर द कॉजेज फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म. नाउ अभी हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है वो देख लो. हाइपोथायरॉयडिज्म
कौन सा? हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपो मतलब क्या है? डिक्रीज द लेवल ऑफ थायरोक्सिन, डिक्रीज लेवल ऑफ T4, डिक्रीज लेवल ऑफ T4, that is known as hypothyroidism. Hypothyroidism. Now, hypothyroidism leads to disease known as myxedema. कौन सा डेमा? मैक्सिडेमा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म लीड्स टू विच डिजीज? मैक्सिडेमा। मैक्सिडेमा है ना, इसके नाम में रखा है, जैसे आप बोलते हो ना नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा था। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में एक लड़की है, उसका नाम है गुड्डी, है ना। गुड्डी क्या है मतलब? गुड्डी नाम क्या इंडिकेट करे? कुछ भी नहीं। गुड्डी मतलब एक सिंपल सी लड़की होगी। बट आपके क्लास में एक लड़की है, उसका नाम है शकुंतला देवी। तो शकुंतला देवी नाम क्या दर्शाता है आपको? इट विल इंडिकेट यू समथिंग लाइक अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर, या फिर कोई वॉरियर है ना। तो वैसे ही बहुत कुछ होता है नाम में। तो मैक्सिडेमा मतलब क्या? मैक्स फॉर ज़्यादा, डीमा फॉर इडीमा, इडीमा EDMA। मैक्सिडेमा मतलब देर इज अ स्वेलिंग, है ना। So it is due to the disease of thyroid, and it may be either genetic origin, and it may be due to the deficiency of iodine or deficiency of thyroid stimulating hormone. And again, common cause of this myxedema is nothing but the one autoimmune disease known as a Hashimoto's thyroid, है ना, thyroiditis। Hashimoto's thyroiditis मतलब ये इन्फ्लेमेशन होता है थायराइड ग्लैंड का। नाउ दिस मैक्सिडेमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय जनरलाइज्ड इडीमा। मैक्सिडेमा में क्या है? पेशेंट को इडीमा हो जाएगा, स्वेलिंग दिखेगा ना, बराबर दिखेगा, चांद जैसे दिखेगा वो। जनरलाइज्ड इडीमा इन्वॉल्विंग फेस, मून फेस, तो जो उसका फेस है उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाएगा। बैगीनेस अंडर द आइज, बैगीनेस मतलब क्या है? जो आइज है उसके आइज के नीचे उसका ऐसा थोड़ा सा लटक जाएगा वहाँ पे, है ना। आई लीड्स वगैरह के नीचे जो वो पार्ट है जो अंदर रहता है नॉर्मली, वो लटक जाएगा। दैट इज नोन एज बैगीनेस अंडर आइज। नॉन पिटिंग इडिमा, तो इडिमा जो है दैट इज नॉन पिटिंग टाइप। मतलब क्या है? जैसे आपको कोई हाथ में सूजन आ गया, पैर में आ गया, तो आपने वहाँ पे टच किया फिंगर से, है ना, 1-2 मिनट आपने टच किया, तो क्या होता है? वहाँ पे गड्ढा बन जाता है ना। जहाँ पे भी इडिमा है उसको टच किया आपने एक कुछ सेकंड के लिए या आधा मिनट के लिए, वहाँ पे गड्ढा बन जाता है। वो बाद में बढ़ता है, लेकिन गड्ढा बन जाता है। नोन एज अ पिट, नोन एज अ पिट। बट द इडिमा इन द मैक्सिडेमा इज नॉन पिटिंग टाइप ऑफ इडिमा। मतलब क्या? जो मैक्सिडेमा के पेशेंट है उसमें जो स्वेलिंग दिख रहा है आपको, वहाँ पे अगर जाके आपने टच किया कुछ सेकंड के लिए, वहाँ पे गड्ढा नहीं बनेगा। वो दैट इज अ हार्ड इडिमा, इज अ हार्ड इडिमा, is known as non-pitting edema. Hard edema does not make pit when pressed by finger. Now it is due to the collection of the hard edema is due to the collection of hyaluronic acid and chondroitin sulfate. That's why it is a hard edema. Yeah? And also can leads to atherosclerosis. It also can leads to atherosclerosis. तो मैक्सिडेमा के कारण एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है आपको। मैक्सिडेमा हियर इज अ प्रेस्ट। नाउ सेकंड डिसीज इज क्रिटिनिज्म। सेकंड डिसीज इज क्रिटिनिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म results in the or may lead to maxedema, then cretinism. Second disease is cretinism. कौन सा निज़म? cretinism. Now cretinism may be either that is due to the congenital absence of thyroid, मतलब बचपन से ही उसको थायराइड ग्लैंड नहीं है, congenital absence of thyroid or lack of iodine in the diet, that can lead to cretinism, है ना। इसके फीचर्स क्या है अपन देखेंगे। क्रेटिनिज्म में क्या होता है? न्यूबॉर्न जो बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी विद थायराइड डिफिशियंसी इज नॉट इमीडिएटली डायग्नोज्ड।
जो बच्चा होता है नया नया अभी, जैसे मान लीजिए किसी का बेबी हुआ है, वो बेबी को इमीडिएटली थायराइड का डेफिशिएंसी है या नहीं, वी कैन नॉट टेल, बिकॉज एट द बिगिनिंग दैट बेबी मे बी नॉर्मल क्यों लगेगा, बिकॉज थायराइड हार्मोन्स कैरिड फ्रॉम मदर, they may be present in the blood of baby, and that's why symptoms of thyroid deficiency will develop after a few weeks of birth. And there is a symptoms like sluggish movement, symptoms like sluggish movement. sluggish मतलब क्या है, बहुत ही धीमा, sluggish movement बहुत ही धीमे धीमे मूवमेंट करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कोई 8-10 दिन से भूखा है, तो उसने उसको खाना दे दिया, आपने इतना खा लिया उसने, उसको उठा नहीं जा रहा है और चलने नहीं आ रहा है, तो उसको बोलेंगे स्लजिस मूवमेंट, बहुत ज़्यादा। और किसी में जैसे बहुत हेवी या फिर मसल उसके स्लोली काम कर रहे हैं, उसको स्लजिस मूवमेंट। एंड क्रोएकिंग साउंड जो जिसमें रेटिनिज्म होता है, उसमें ये 2 सिम्टम्स होते हैं, क्रोएकिंग साउंड मतलब साउंड लाइक अ फ्रॉग, से आपका ना फ्रॉग, बेडूक जो होता है, बेडूक साउंड लाइक अ फ्रॉग। फ्रॉग कैसे है, बहुत बड़ा आवाज रहता है, डराव डराव, और उसमें वाइब्रेशंस रहती है लाइक दैट, क्रोएकिंग साउंड। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड then the child will become mentally retarded permanently. Now in the cretinism, skeletal growth is more affected and than tissue growth. जो cretinism होता है उसमें skeletal growth ज़्यादा अफेक्ट होता है than the tissue growth। उसके कारण क्या है, skeletal growth अफेक्ट नहीं करना, वो बच्चा छोटा रहता है हाइट में भी, है ना। So there is a stunting of growth, there is a stunting of growth. You will get confused between the cretinism and pituitary dwarfism. pituitary dwarfism और cretinism में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि दोनों में भी क्या है, ग्रोथ कम होता है और हाइट उनका छोटा रहता है, बट देयर इज अ डिफरेंस, आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। So skeletal growth is more affected than tissue growth, and that's why there is stunting of growth, and the baby will be stunting of growth with a bloated body। तो bloated body उसका बड़ा रहेगा, लेकिन जो एक्सट्रीमिटीज है वो छोटी रहेंगी। there is a large tongue in that baby, and the tongue will get down from the mouth, and there is a dripping of saliva, you know, which can cause problems in the swallowing and breathing. There is a characteristic guttural breathing which can choke the baby। तो एक पर्टिकुलर टाइप का कैरेक्टरिस्टिक ग्लूटरल ब्रीदिंग रहता है उसमें, और उसके कारण वो बेबी में चोकिंग भी हो सकता है, वो मर भी सकता है। तो क्रेटिनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम योर पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म होता है दैट इज डिफरेंट। तो क्रेटिनिज्म वर्सेस डॉर्फिज्म क्या है, यहाँ पे देखो, क्रेटिनिज्म वर्सेस डॉर्फिज्म। क्रेटिनिज्म क्या है, देयर इज अ मेंटली रिटार्डेशन एंड देयर इज अ डिसप्रोपोर्शनेट बॉडी पार्ट ग्रोथ। मतलब एक हाथ जो है वो छोटा रहेगा, एक हाथ लंबा रहेगा, एक पैर छोटा रहेगा, एक तो डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ ऑफ बॉडी पार्ट। जैसे मुंह है उसका, एक इसमें कम ग्रोथ रहेगा, एक इसमें ज़्यादा रहेगा, दैट इज अ मेंटल रिटार्डेशन, डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ ऑफ बॉडी पार्ट इन द क्रेटिनिज्म। बट इन अ पिट्यूटरी डॉर्फिज्म बस उसका हाइट कम रहेगा, ऑल पार्ट्स आर प्रोपोर्शनेट but length is small, nervous system is normal and reproduction is also normal in dwarfism। जो pituitary dwarfism होता है उसमें ये सब नॉर्मल होता है, बट क्रेटिनिज्म में sexual reproduction system is also not normal, right? Now next one is a goiter। goiter मतलब क्या, enlargement of your thyroid gland, enlargement of thyroid gland that occurs in the both hypothyroidism as well as hyperthyroidism। Enlargement of thyroid gland occurs in the hypothyroidism as well as hyperthyroidism। So
goiter in hypothyroidism is known as a non-toxic goiter. हाइपोथायरॉयडिज्म में नॉन टॉक्सिक गोइटर होता है एंड हाइपरथायरॉयडिज्म में टॉक्सिक गोइटर होता है। ये याद रखो, एक हर बार क्वेश्चन आता है। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि जैसे आयोडीन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ब्लड टू द follicular cells of thyroid gland. Then there is a oxidation of iodine by peroxidase enzyme. So iodide will be oxidized to iodine because iodine in the plasma, जैसे आप खाते हो iodine, that is converted into iodide. Now iodide from plasma is transported to the follicular cells of thyroid gland and there is oxidation of iodide to the iodine. Now iodine is transported inside the follicle cell. So there is a tyrosine over there, tyrosine amino acid. So tyrosine is combined with the iodine. There is a iodination of tyrosine by iodinase enzyme in the thyroglobin. तो क्या होगा यहाँ पे बनेगा आपका मोनो आयोडोटायरोसिन MIT मतलब MIT कॉलेज नहीं, मोनो आयोडोटायरोसिन। मोनो आयोडोटायरोसिन के दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर क्या बनेंगे, डाई आयोडोटायरोसिन है ना। और मोनो आयोडोटायरोसिन का एक मॉलिक्यूल एंड एक मॉलिक्यूल डाई आयोडोटायरोसिन का क्या बनेगा, triiodothyronine, that is a T3, and two molecules of diiodothyronine will combine to form a tetraiodothyronine, that is a thyroxine, and that will be released in the blood again, known as the thyroid hormones. Now है ना, आयोडीन का अगर डेफिशिएंसी हो गया आपको या फिर आयोडीन कम मात्रा में लिया तो क्या होगा, गोइटर होगा, enlargement of thyroid gland. आयोडीन कम है तो इसके कारण क्या होगा, आपको गोइटर होगा, बिकॉज आयोडीन कम है लेकिन थायराइड ग्लैंड विल ट्राई टू प्रोड्यूस मोर, है ना, थायरोक्सिन. नाउ हाइपोथायरॉयडिज्म लीड्स टू क्रिटिनिज्म एंड मैक्सिडेमा, ये दोनों आपने देखे अभी. हाइपरथायरॉयडिज्म के रीजंस क्या है, ग्रेव्स डिसीज है और वहाँ पे एडिनोमा है एंड एक्सोथर्मोस होता है वहाँ पे. हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स है इंक्रीज्ड BMR, वेट लॉस, हेयर लॉस, गुड एपेटाइट, एंजाइटी, फिजिकल रेस्टलेसनेस, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, हीट इंटॉलरेंस. हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स क्या है, डिक्रीज्ड BMR, वेट गेन, एनोरेक्सिया, डिप्रेशन, साइकोसिस, ड्राई स्किन, बिटर हेयर, ड्राई कोल्ड स्किन एंड कॉन्स्टिपेशन. तो पैराथायरॉयड हार्मोन्स कल अपन डिटेल में देखेंगे पैराथायरॉयड हार्मोन्स के बारे में, बट है ना, पैराथायरॉयड हार्मोन्स कॉजेज लेस सिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन्स लीड्स टू हाइपोपैराथायरॉयडिज्म एंड ये अपन कर लेंगे पैराथायरॉयड हार्मोन्स के डिसीज है ना वो, ठीक है. तो दिस इज नोन एज अ क्रिटिनिज्म. ये जो पेशेंट, ये जो बच्चा है, ये पेशेंट ऑफ क्रिटिनिज्म, 3-month-old बेबी इज अ क्रिटिनिज्म. देखो यहाँ पे उसकी एक्सट्रीमिटीज क्या है, छोटे है, इसके हाथ पैर क्या है, बट यहाँ पे देखो ब्लॉटिंग है, ब्लॉटिंग यहाँ पे सब क्या है, ब्लॉटिंग है. देयर इज डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ यहाँ पे भी. तो देन गोइटर मतलब क्या, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. ये जो थायराइड ग्लैंड है आपका वो एनलार्ज हो गया. नॉन टॉक्सिक गोइटर, टॉक्सिक गोइटर. नाउ टुमारो विल सी द अबाउट द पैराथायराइड हार्मोन. कल अपन पैराथायराइड हार्मोन के बारे में कल देखेंगे. आई होप टुडे यू हैव अंडरस्टूड. ये समझ में आया. आज थोड़ा सा 45 मिनट ही लेक्चर लिया मैंने, कर लेंगे अपन पूरा. Tomorrow we'll try to finish this hormonal system from HAP point of view and so that we'll start the pharmacology, drug acting on hormonal system. ठीक है.